फ्रेंड से 1 लाख रुपए का लोन नहीं, कुछ जरूरत थी आपसे ले लिया, हम सब ने लिया है, किसी ने कभी टाइम पे दे दिया, हम वो वाली बात दोस्त को बोलेंगे भाई किसी को मत बोलना। बट अगर हमने 10,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना SIP में, हम जाके 500 लोगों को बोलेंगे कि देखो मैंने SIP चालू कर दिया, आई एम नाउ अराइविंग इन लाइफ। जो अपना डे 0 प्लेसमेंट्स होता है अपने कैंपस में, उसमें मैंने बहुत सारी HR कंपनी में अप्लाई किया और मैं सभी में डिक्लाइन हो गया। ओह डैम। एंड मे बी गॉड और मे बी डेस्टिनी नेवर वांटेड मी यू नो टू बी एन HR प्रोफेशनल। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैशेबल मॉर्निंग्स। दिस इज योर होस्ट सिद्धार्थ आलमबायन और हम फिर आ गए हैं बैंगलोर शहर एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाते हुए विजनरी से मिलने। देखिए ये है उनका ऑफिस और वाइब तो काफ़ी चेक कर रही है, बट यूल रियलाइज व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट एवरी टाइम आई यूज द पन चेक। बिकॉज हेलो आदित्य, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। ये है देखिए रीजन, बिकॉज वी बीन डूइंग अ लॉट ऑफ चेक पन्स to check where all it can apply. So then let's check it out. Yes, of course. आइए। Hey Aditya, how are you? क्या हाल है भाई? Pleasure meeting you, man. How are you doing? Thank you for getting us to Bangalore. Come. आइए। All good? Yep. Hello Aditya, welcome to Mashable Mornings. How are you? Very good. How are you, Sid? बहुत सुंदर यार। देखिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये लोगों को बताते हुए कि इंदौर का एक अपना लड़का क्रेडिट हेल्थ सुधार रहे हैं हमारे देश की चेक के साथ। तो यार ये तो आप नेक इरादे से स्टार्टअप खोल लिए हो। कैसे आइडिया आया? Actually थोड़ा सा हिस्ट्री में आना पड़ेगा। जी चलिए ना। I've been born and brought up in a family of everyone where everyone has been just doing business. Okay, and just me and my brother and my sister, just the three of us were in jobs. But in fact, every woman in my family, so my mother, my chachis, everybody, also has a small, big business of their own. Oh wow! Yeah, and it's something that's been true from 2003. So for me, it was only a matter of time कि मैं कब करने वाला हूँ। ये नहीं था कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। चॉइस नहीं थी। चॉइस से ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, मतलब फील ही नहीं था कि मुझे पता था कि इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। अराउंड 2019 व्हिच इज द ईयर व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई वाज नाउ एट इन द स्पेस वेयर आई वाज कंप्लीटली हैप्पी कि हाँ भैया खुद का कुछ कर सकते हैं। सुपर। तो was toying with 4-5 ideas, 3-4 ideas actually to be fair, and हम लोग 2-3 लोग थे, two friends of mine who also happened to be my team members in my current company. Super. और मैं उन लोगों से ideas bounce off करता था। एक बे एरिया करके जगह है बैंगलोर का बे एरिया। बैंगलोर में बे एरिया है वो। बैंगलोर में आधे से ज्यादा फाउंडर्स और जो लोग समझ गए हैं कमेंट्स में प्लीज हमें बताइएगा। 70-80% इन्वेस्टर्स एक ही एरिया में रहते हैं, वहीं पे सब डीले होती है। तो वहीं पे हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो उन लोगों से मैं सब डिस्कस कर रहा था एंड बहुत सारे आइडियाज़ ऊपर नीचे चलते रहते थे। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि ये हर हफ्ते की वीकेंड की कॉन्वर्सेशन होती थी, फिर फिजल आउट हो जाती थी कि फिर लगता था यार कुछ दम नहीं है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन जाके मैंने रिज़ाइन कर दिया। आई वॉज रिज़ाइनिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, आई वॉज अ सीनियर डायरेक्टर एंड मैं वहाँ पे उनका फिनटेक और पेमेंट बिजनेस संभाल रहा था। जब अब तो रिज़ाइन ही कर दिया, अब तो मुझे पता, अब तो 2.5 महीने ही नोटिस पीरियड के, और फिर तो लाइफ में खुद कुछ ही करना पड़ेगा। Then the focus on those 3-4 ideas started becoming more and more prominent. Interestingly, the 2 ideas which zeroed down the most, one was around happiness and second was around credit health. तो इन दोनों आइडियाज में से एक आइडिया आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगता हुआ लगा? फ्रूटफुल भी इसलिए कि मेरी डेफिनेशन ऑफ फ्रूटफुल थी कि how many lives will I be able to touch? Okay. Or that idea will be able to touch to me. Started becoming the vantage point. Okay. And while every idea is, I think every idea stems from your personal experiences. For a lot of founders, I wanted to add the layer of hardcore data behind it. ठीक है. तो जितना मैंने रिसर्च करना चालू करा, मैंने रियलाइज करा कि इंडिया में credit health is a fundamentally big challenge. Okay. हमारे आज more than 50-60% of Indian consumers आज की credit health ठीक नहीं है.
क्या मतलब होता है भाई क्रेडिट हेल्थ अच्छा नहीं होने का? तो बहुत मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेफिनेशन है, बट मैं बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बताता हूँ सो दैट द ऑडियंस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. देयर इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रेडिट हेल्थ इन इंडिया इज व्हाट इज नोन एज योर क्रेडिट स्कोर. करेक्ट. ओके. ये क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट लगभग पिछले 20 साल से इंडिया में है. देखिए, आप लोग अगर कंफर्टेबल हो ना तो ड्रॉप योर क्रेडिट स्कोर इन द कमेंट्स. मुझे देखना है कितने लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर वर्बैटिम पता है. चलिए, आप एक्सपीरियंस है जहाँ पे भी या चेक पे जाके अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा. करेक्ट. बट आई वांट टू सी हाउ मेनी आर अबव 800 and 815 830. वो थोड़ा क्रेजी है. वो मतलब वो शो ऑफ वाले लोग होंगे ना. करेक्ट. हाँ. बट तो क्रेडिट स्कोर एक 300 से लेकर 900 तक की एक स्कोरिंग एक स्केल होती है जी. एंड the score is your first and the primary indicator of how your credit health is. Okay. तो इंडिया में most financial institution, especially for when it comes to lending or giving credit, look at a credit score of 750 plus, which is तो लोन लेना हुआ आपको, लोन लेना हुआ, कार्ड लेना हुआ, या कुछ भी NPL में अगर आपको कुछ करना हो, या फिर आपको कोई होम लोन लेना हो. पर ये BNPL बोल के मैं आपको सरल रूप में बताता चलूँ तो बाय नाउ पे लेटर वाला जोन भी हो. तो करेक्ट. तो उन सब में जहाँ भी लेंडर्स राइटफुली आपको अंडरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपका ब्यूरो स्कोर, क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली दिखेंगे. ओके. और 750 इज अ गुड इंडिकेटर कि जहाँ पर कि जिसके ऊपर आप बुलाएं कि आपकी क्रेडिट हेल्थ ठीक है. मोस्ट इंस्टीट्यूशंस विल बी हैप्पी टू कंसिडर यू फॉर लेंडिंग. ठीक है. उसके अंदर भी और डिटेल्स होती हैं, बट वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है. इंडिया में लगभग 45 से 50% लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 से भी नीचे. राम, क्यों ऐसा? एंड इट स्टेम्स फॉर मल्टीपल रीजन. ऐसा नहीं कि वो 50% लोग फ्रॉडस्टर्स हैं या और दे डू नॉट हैव मनी. इट्स नॉट. इट्स अबाउट कि fundamental knowledge about how to manage credit in India is very weak, is very young. And Sid, I'll throw a question back to you, correct? So that you'll be able to understand this. जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने when you started going to school 10th 11th class तब आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में बात करना चालू करा. जब कॉलेज गए होंगे तो आपको बताया होगा कि पैसा कमाना कितना जरूरी है. फिर थोड़ा सा और बड़े होंगे तो आपको बताया होगा कि चलो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. करेक्ट. जी. आपसे लास्ट टाइम आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने डेट के बारे में कब बात करी थी? भाई वो इको क्लास में एक आध बार जो बात होती है क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से. करेक्ट. और यही सबसे बड़ा इट इज वेयर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम बिकम्स. इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड फैमिली सिस्टम बोथ में डेट को कैसे मैनेज करना है, क्रेडिट को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं होती है. सो मच सो दैट डेट इज एक्चुअली अ टैबू फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स. वही बोलने वाला था कि डर है भाई. हाँ. मेरे पापा ने तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया आज तक, रखते नहीं है वॉलेट में. क्योंकि डेट नहीं लेनी. करेक्ट. इनफैक्ट आप अगर एक किसी अपने फ्रेंड से 1 लाख रुपए का लोन नहीं, कुछ जरूरत थी, आपसे ले लिया, हम सब ने लिया है, किसी ने कभी टाइम पे दे दिया, हम वो वाली बात दोस्त को बोलेंगे भाई किसी को मत बोलना. बट अगर हमने 10,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना SIP में, हम जाके 500 लोगों को बोलेंगे कि देखो मैंने SIP चालू कर दिया, आई हैव नाउ अराइविंग इन लाइफ. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. एंड माय एनालॉजी इज वेरी सिंपल. समथिंग दैट यू टॉक लेस, you end up understanding less, and something that you understand less, you make significantly more mistakes. I'll give you one more parallel. Sex education. Exactly same thing, correct? We talk less about it, we understand less about it, and therefore we make more mistakes. And I don't need to go dig deeper into it. That's it. And that is what has happened within India for many years. But the shining light is that over the last 10, 12, 15 years, significant improvements have been happened on two facets of debt credit management. One is there has been a concentrated effort from the government, from financial institution to make sure that credit reaches more and more people. And बहुत ही critical है वो, because credit economy drive करता है. And again, just for everyone to understand, what does it mean कि credit economy कैसे drive करता है. Let's say imagine करो ये कार मेरी होती है, सेठ के पास तो पैसे हैं, but if let's say I earn 40 lakh rupees in a year, 30 lakh rupees in a year, and I end up buying this is a GLC? GLC, yeah. This is a GLC, let's say 70-75 lakh rupee car. Most likely,
I will buy this on With a car a loan. Yeah. Okay. Now when I take a loan and when I buy a car, I'm now contributing 70 lakh rupees into the GDP. Yeah, to the Correct, GDP. fundamental, because goods and products sold Yes. into a country. उसके जब tax जाएगा वो government एक तक। कार बिकती है हाँ। तो वो 2 लोगों की तनख्वाह भी निकालती है। जब वो 2 लोगों का तनख्वाह निकलती है तो उनका घर चलता है, फिर वो लोग और परचेज करते हैं। सो एक क्रेडिट के आने से इकोनॉमी में 3-4 लीवर घूमते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही क्रिटिकल रेशो माना जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट टू जीडीपी रेशो। ठीक है जी। Globally, most developed nations, it's a double-edged sword, but most developed nations operate at somewhere between 80 to 100% of credit to GDP ratio. 80 to 100% मतलब सब लोग बहुत समान क्रेडिट कार्ड। There is that amount of active credit in the country at that point in time. That is that high. Superb यार। In India, we have now touched, I think the last that at least I read was 53-54%. Okay. And that's the gap that needs to get covered. And this also has improved in the last 3 years. Yes, we were signed 40-42% just 8-10 years before. So we have made movements. There is still a significant movement to be done. Again, so like therefore credit is extremely important, but उसका एक flip side भी है, correct? We have to be aware and educated as to how to manage credit. हाँ, रीपेमेंट नहीं की टाइम पे तो वो क्रेडिट स्कोर आपका गिरता भी है। ये मैं उसको बहुत सिंपलिस्टिकली समझाऊं तो क्रेडिट को अगर आपने अपने क्रेडिट को नहीं संभाला, हाँ, तो क्रेडिट आप पे हावी हो जाता है। बहुत। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली द फैक्चुअल ट्रूथ. Till the time we do not get educated, we will realize that this is just like one more thing as to today if you are not cautious while you're driving, you might end up bumping into someone, but once you get more educated about it, it's just a way of life for you. Yeah. The day I start understanding कि क्रेडिट कैसे मैनेज करना है, it will become a part of life for me. बट ये कोई सिखाए मुझे बचपन में या मेरे पेरेंट्स बताएं तो मुझे पता चले, या मेरे पास साधन हो, जैसे कि आपने एक ऐप बना दी, तो मुझे ये सवाल आता है भाई कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक संक्षेप ऐप में डाल के यूजर्स तक पहुंचाने वाला आइडिया जो चमका, और फिर उसको कंसाइज करना, क्योंकि आप कई सारी चीजें कर सकते थे ना इसमें. सो देन फाइंडिंग वन वैल्यू प्रोपोजिशन कितना डिफिकल्ट था, हाउ डिड यू टेक दैट एट अ स्टेप? या क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत बड़ा वर्ड है सेट. करेक्ट, देयर आर सो मेनी फैसेट्स. क्रेडिट को सिखाना, क्रेडिट एक्सेस करवाना, उसको रीपे कैसे करना, मैनेज कैसे करना, बंद कैसे करना, रीप्राइस कैसे करना, और नया क्रेडिट प्रोडक्ट अपग्रेड कैसे करना, ये सब फैसेट्स हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में. हमने अभी बेसिक फर्स्ट बेबी स्टेप्स लिए, जहाँ पर हमने वो स्टार्ट करा जो कि कंज्यूमर्स को सिंपलिस्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम कस्टमर्स को एक पर्सनल डैशबोर्ड बना के देते हैं उनका खुद का. जब भी वो हमारे ऐप पे आते हैं तो हर बंदे का अलग डैशबोर्ड बनता है, सबका अपना अलग अलग डैशबोर्ड बनता है. तो आप अगर हमारे ऐप पे आओगे तो आपको दिखेगा कि एज ऑफ राइट नाउ आपके जितने भी अनसिक्योर्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, उन सब पे टोटल एज ऑफ राइट नाउ कितना बकाया है, वट एवर अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. एट एनी डे ऑफ द मंथ दैट यू कम, यू विल हैव एन अपडेटेड फिगर, ओके, विच गिव्स यू अ वेरी गुड व्यू कि अच्छा इतना मैं डेट में, इतना मैं ऑलरेडी, मेरे को अभी दिस इज द अमाउंट दैट आई नीड टू पे. सो आई एम एटलीस्ट इन माई फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वन व्यू दैट आई गेट. मुझे वो क्रेडिट में कहीं और मिलता नहीं था. तो एज अ कंज्यूमर मुझे भी लगता था अच्छा मुझे एक दो ऐप पे जाकर देखना पड़ेगा, या बैंक में स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, या लोगों को एसएमएस चेक करना पड़ेगा. बट आई एम मल्टी कार्डेड, आई एम श्योर यू आर आल्सो मल्टी कार्ड, करेक्ट, मल्टी कार्ड प्लस होम लोन. सो एक व्यू उनको चाहिए था. तो हमने बोला यार ये एक डैशबोर्ड बना दो कि हर कस्टमर के ये बड़ा इजी हो जाए कि चलो भाई 3 कार्ड के ऊपर एक लोन के साथ टोटल मेरा 47,000 रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे पे करना है. तो एक वो प्रोडक्ट बनाया. एक सेकंड फीचर लेकर जो कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट गिविंग यू अब योर ब्यूरो स्कोर. तो हमने पार्टनर किया हम एक क्रेडिट ब्यूरो से, जो आपको आपका ब्यूरो स्कोर हर महीने रिफ्रेश करके दिखाता है, जैसे एक्सपीरियन. हम वी आर पार्टनर्ड विद एक्सपीरियन. ओके, सुपर. ओके, एंड थर्ड फिर हमने बनाया कि इन क्रेडिट को रीपे करने के तरीके इन द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे, विच इज़ यू कैन कम ऑन आवर ऐप एंड यू कैन पे ऑल योर बिल्स वन क्लिक, in one click, and which is actually the first of its kind product in India. जैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते होंगे और आपने एक टी शर्ट लिया और आपने एक डेनिम लिया और शू लिया. नाउ यू डोंट केयर कि वो 3 अलग अलग सेलर्स हैं कि वो सेम सेलर है.
आप वो तीनों का क्यूमुलेटिव पैसा फ्लिपकार्ट अमेजोन दे देते हैं, एंड देन यू ट्रस्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट दैट दे विल टेक केयर ऑफ इट एज टू हाउ द मनी विल गो टू सेलर्स, करेक्ट। वी बिल्ड द सेम प्रोडक्ट, वी कॉल इट पे टुगेदर। तो लेट्स से आपके दो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं हाइपोथेटिकली, एक की ड्यू डेट एक है, एक की थर्ड है, एंड यू डोंट वांट टू गेट द हैसल कि यार मैं 1 तारीख को भी याद रखूँ फिर 3 तारीख को भी याद रखूँ। आप आइए, दोनों को एक साथ एक बास्केट में डाल दीजिए और आप एक साथ पेमेंट कर दीजिए, वील टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आज अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आपको सोमनाथ आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते होंगे, मोस्ट लाइकली आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके ड्यू डेट के 1 दिन पहले ही कट जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ओ मतलब पैसा आने में मुझे 1 दिन लग जाएगा, करेक्ट, तो इसलिए वो पहले ही काट लेते हैं। मैं खुद बहुत बार अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स हमेशा 1 या 2 दिन पहले पे कर देता था। मैं तो 2 दिन पहले पे करता था ताकि क्रेडिट स्कोर ऊपर जाए 2 पॉइंट 1 पॉइंट और लेट ना हो जाए हम लोग पेमेंट देने में। yes, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि पैसा पहुंचा ही नहीं, तो हमने इस सेकंड चीज का जो सॉल्व करने की कोशिश करी उसको था स्पीड जी। तो वी देन बिल्ट अ टेक स्टैक जहाँ पर कि आप जैसे हमें पेमेंट करते हैं उसके अगले 120 सेकंड के अंदर you don't get a confirmation from us, but you get a confirmation from your bank that they have received the money. तो जब आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपने मैं फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का बिल पे करा और आपने बोला यार दिस इज माई टुडे इज माई ड्यू डेट and you should make sure that the money reaches, and which is it should reach. Yes. In that 0.04% chance, you suffer because now I am returning the money to you back to you because of some issue at somewhere in the instruction. So 99.96 brilliant for me. We have done more than 8 million transactions. So it is great. But for us, the whole team strives for कि failure होना ही नहीं चाहिए because एक कस्टमर का फेलियर कैन रिजल्ट इन टू 6-7 हज़ार ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज, 800,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज करना, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ये जो एंड पेमेंट वाला जो काम हुआ, जैसे आपने बोला फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एग्जांपल देते हुए, ये आप समझ फ्लिपकार्ट से भी लेके आ रहे थे, राइट? दैट लर्निंग कम्स फ्रॉम देयर आल्सो, राइट? यस। सो व्हेन यू सेड यू डिड दैट एट फ्लिपकार्ट, व्हाट डज दैट मीन? वो मुझे वो भी डिकोड करके बताओ ना। So 2004 to 6 was when I was doing my college. जी। And I am actually in reality an HR specialist. Oh really? I am so I've done an MBA which is a 2-year HR course. But just to be honest, जो अपना डे 0 प्लेसमेंट्स होता है अपने कैंपस में, उसमें मैंने बहुत सारी HR कंपनी में अप्लाई किया और मैं सभी में डिक्लाइन हो गया। Oh damn. And maybe God or maybe destiny never wanted me to be an HR professional. और डे 1 पे सिटी बैंक कैंपस आई थी, एंड जो प्री प्लेसमेंट टॉक्स होती है सो उसमें उन्होंने दिया, और जस्ट टू मेक मोर नंबर्स, people who had just failed and not get placed were all sitting there. ये वो देवता हैं जो सबको उठाने आते हैं एक साथ। So I raised my hand during the placement talk and said, सर आप सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं तो क्या आप HR से लोग देखेंगे? So I don't want to name the guy, fantastic guy. He said, जब तक तू बेच सकता है तब तक तू आ सकता है। Oh wow. And that's what happened. I applied. Good for you, man. That really worked. Thank God. And the process happened. I was lucky to get hired. We are all always speculating, correct? You've been through that journey. Yes, of course. As to what is the role that I will get from campus, correct? And the most common narrative was कि यार बैंक में कुछ भी मिल जाए, but credit card sales ना मिल जाए यार. Okay? Because ऐसा होता है दूर से देखने में कि यार वो तो चौराहे पे खड़े होके कार्ड बेच रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। So like एक वो था, हमको बनना था वेल्थ मैनेजर। ऐसा कूल लगता है कि आप रिलेशनशिप मैनेजर है, वेल्थ मैनेजर हैं, सब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, या मार्केटिंग में कुछ मिल जाएगा। मुझे क्रेडिट कार्ड सेल्स में जो आप चाहोगे नहीं वो आपके साथ वो होगा ही। करेक्ट। and then I did that for 2.5 years. Said it's possibly the best 2.5 years of my career. Really? Yeah, Citibank card sales is like, जैसे HUL के बारे में बोला जाता है, HUL जब आप कैंपस ज्वाइन करते हैं तो आपको विलेज में भेज देते हैं to make you the best version of yourself. Correct. Citibank cards was exactly like that. So, and for 2.5 years I did that. I had an amazing time.
तो कितने क्रेडिट कार्ड बेच लिए थे? गुड, आई मीन लाइक मैं खुद से नहीं बेचता था. वी यूज्ड टू वर्क, वी यूज्ड टू हैव एजेंसीज जिनको आप DSA बोलते हैं. Okay. एंड वी यूज्ड टू मैनेज दोज एजेंसीज. फ्रॉम देयर आई मूव टू प्रोडक्ट, did product management for 2.5 years, portfolio management, and then did partnerships. तो 2006 से लेकर 2014 तक एकदम सूट बूट टाई वाली ज़िंदगी थी. फिर फ्लिपकार्ट हो गया. फ्लिपकार्ट ने मतलब if you've seen the world from a bank side, why don't you come and see the world from a merchant side? सुपर. हाँ. So 2014 में मैंने कहा, तब Flipkart was already 7 years old. It was not that it was like a 70-day startup. My first day in office said that it's an absolutely crazy experience. I walk in, 20% people are in shorts. That folks for you is the vibe of Flipkart. Used to be. Now it's a fantastically, now it's evolved organization. Yes. And I reach my boss and I ask, where's my desk? यही कोरमंडलम ऑफिस में the legendary, the OG office. Absolutely, the OG office की where's my desk? So he pointed somewhere. Okay, and there was only a window where he was pointing. Then I looked down. There was a beanbag. He said, "Please figure out your life." So from having a fairly wide desk and with suits and ties every day, I was changed. No, I just got fascinated by it. Like not even for one day, I just felt कि I'm out of place. Yeah. It just caught my imagination कि oh, this is actually what it means to be a startup. Like from day one, this happened. Then I had a small 1.5 year stint in the ad tech business. Flipkart का एक advertising business है. तो वो जो incubation जब team थी उसका हिस्सा था मैं. जी. And then फिर हमने एक fintech group बनाना स्टार्ट किया. उसका मैं हिस्सा बना. वहाँ पे मैं बिजनेस लीड करता था. 2-3 प्रोडक्ट्स का आपने नाम सुने होंगे और शायद यूज़ भी करते होंगे. जी. एक प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट पे लेटर. हाँ. तो वो हमने लॉन्च किया. ये वही तो है बाय नाउ पे लेटर का. बाय नाउ पे लेटर का फ्लिपकार्ट का वर्जन है. जी. फिर एक नो कॉस्ट EMI करके प्रोडक्ट है जहाँ पर कि आपको बिना इंटरेस्ट के किस्त में मिलता है. करेक्ट. बजाज जो सबसे फेमस है उसको करने के लिए. और तीसरा एक फ्लिपकार्ट का को ब्रांड कार्ड है एक्सिस. वो नहीं फ्लिपकार्ट एक्सिस को ब्रांड कार्ड है. ओके. which has great benefits on shopping on Flipkart and other around. तो ये तीनों चीज़ें हमने उस वक्त करी और फिर वहाँ से फिर कूद गए नए रोल में जो था कि स्मार्टफोन कैटेगरी हैंडल करने का. जो सबसे बड़ा आपका BBD का सबसे बड़ा एलिमेंट है. BBD ले लीजिए. रोजमर्रा में ई-कॉमर्स के अंदर जी स्मार्टफोन कैटेगरी से बड़ी कोई कैटेगरी नहीं होती. अच्छा जी. एंड मतलब अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का माना जाए तो क्लोज टू 40% ऑफ टॉप लाइन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, दीज कंपनीज अक्रॉस इंडिया comes from just one category. It's a very large GMV driving category. Loved that 2.5 years of experience there in Flipkart in that role. मतलब अगर पेमेंट्स फास्ट है, फिनटेक फास्ट है, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री सुपर फास्ट है. मतलब वहाँ का यही है. आप अपना ही एक्सपीरियंस देख लीजिए. हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाती है स्मार्टफोन के अंदर. जी. Like we will all want more iPhone to launch more phones and not wait for more year because हमको लगता है वो एंड्रॉइड कितना आगे जा रहा है या कितनी अलग टेक्नोलॉजी आ जा रही है. करेक्ट. सो इट्स एन एब्सोल्युटली क्रेजी इंडस्ट्री. 2.5 साल वहाँ काम करा. फिर मैं वापस फिनटेक आया. फिर धंधा मेरे को लगा थोड़ा धंधा स्लो चल रहा है. तो मैंने बोला थोड़ी मशीनरी में थोड़ा इंजन में थोड़ा फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा. हम लोग नाइस रोड पे हैं. देखिए बैंगलोर पे यहाँ पर ट्रकों को बिल्कुल सब्र नहीं है. और तो बस ऐसे ही हमने वो 1 साल में काम किया. बिल्कुल सब्र नहीं है. फिर तब वो जो मूवमेंट आ गया कि भाई अब इतना कुछ सीख लिया है from such great people and 2 great organizations, and that I wanted to build something of my own, which is what CheQ is. That is how sort of CheQ became. देखिए हम लोग सभी फाउंडर्स से ये पूछते हैं क्योंकि मैशेबल मॉर्निंग्स है कि आपका मॉर्निंग रूटीन है क्या कोई? मेरा मॉर्निंग रिचुअल बहुत ही सिंपल है. Nothing. I am not a gym guy, which you can sort of clearly know. I get up in the morning. My first and the most important
job that I have is to make sure that my daughter wakes up. Okay. So my biggest contribution at home currently is that I mostly I am the one who's waking her up, giving her a bath, making her ready for school, and then dropping her to the stand. Super. Okay. Because that's the most unadulterated time that I get with my daughter. So cool. Yeah, of course. And I yearn for it through the day, because mostly I'm at office, and then when she comes back home, and then she is equally busy. She has so many classes. Yeah. She has so many extracurricular activity that she loves. And sometimes when I'm reaching home back, either we'll be lucky to catch each other for dinner or to play for some time, or there are also chances that when she might have already gone to sleep. Okay. So this is the morning ritual. कितने लोगों को साथ लेके चल रहे थे आप? Because you've moved 2 jobs, and I know there are some constants in your life that we need to talk about. I believe I'm extremely lucky and very humbled that one, we've been able to build these relationships who have stood the test of times, and second, these guys or girls have trusted, have kept their faith in me. Super. To leave such amazing, fantastic companies, and to come and join brands also. Fantastic. To come and just join an idea. So I mean, I think we are 63 people. आज तक हमने consultants के through total 3 लोग hire करे. 60 people of them which have come via our networks. That's it. Super. And that's really helped us create an extremely close-knit environment. You were at office. Yes. You would have sensed that too. Correct. ऐसे दरवाजा खोल के मतलब बात हो रही है, simple. Correct. So yeah, that's a good vibe to keep. I'll one anecdote. 15-20 days में बात फैल गई, और उसके एक दिन बाद मुझे मेरे सिस्टम में एक ईमेल आ गया कि आपके एक बंदे ने रिजाइन कर दिया है. So of course the managers so and I am shocked, and I call him and I said, dude, what is wrong with you? Why did you do this? He said, I don't know where you're going, I don't know what you want to do, but we are doing this together. And there are a lot of times people ask कि इतने साल काम किया, कितना कमा लिया, करेक्ट? तो मेरे ख्याल आप रिश्ते ही कमाते हो. हाँ जी भाई. तो आप खुद एक इतने बड़ी मिसाल हो उसके लिए. हम अपनी टीम लेके चलते हैं भाई. हाँ. So to me, like that was the beginning of how we've been able to build this company. No, I think a lot of startup founders who are watching this should let us know in the comments below कि ये एक बहुत बड़ा I think एक रूट है, एक जरिया है जिसकी वजह से आप थोड़े जो ये ग्रोथ हैक कर पाते हैं ऐसे वाली जैसे आपने की है. फिर लेकिन ऐसे में how do you reprimand people, because it become equally difficult to then get them into saying कि अरे ये कैसे नहीं हुआ, ये 4 चीजें जल्दी करके ये अगर मैंने अभी यही बता दिया ऑन एयर तो फिर तो फिर मेरी सब स्ट्रैटेजी ऑफिस में फेल हो जाएगी. To develop a culture where 2 things are very, very important. One, we focus on the problem and not on the person. Okay. I think till the time in a conversation as heated or as critical or as divergent views you have, if you can focus on the problem and not on the person, egos don't come in. You don't see the need to actually raise your voice or become personal because you're still focusing on the problem. That's just one thing that we actively do. So when you're able to do that, the other person never feels कि ये मुझे कुछ बोल रहा है या ये मुझसे disagree कर रहा है. Me becomes the last point in your thought process. The problem becomes the center of it. So अगर उसको पता है और आपको पता है कि उसको पता है, तो उसके बाद चिल्लाने की कोई इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन है नहीं. आप अपना कलेजा ठंडा कर रहे हो, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है. उस कॉन्वर्सेशन में आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं रहे हो, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग मोर एंग्स्ट और मोर डर्ट इन देयर माइंड. So we give feedback. I don't think feedback is important, but yeah, reprimanding is hopefully not a word or hopefully not a zone that we enter. Super. Yeah. ये भी सही है. आपकी लव स्टोरी के बारे में पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, आप
आप पूछ ही सकते हो, मैं बैठा हूँ, आपने मुझे कब्जा कर ही लिया 1 घंटे के लिए। तो नहीं, तो ये कहाँ मिले आप लोग? ऑफिस लव रोमांस था क्या? नहीं, दिस इज आई एंड माय वाइफ नो ईच अदर सिंस 10th class व्हेन वी बोथ इन द सेम स्कूल। ओह वाओ। या तो सो वी both belong to Indore. हाँ जी। We both were in the same class from 10th standard. Oh, super. And then we were together in school. Then we went to the same college. Oh wow. And then, as luck would have it, we both were also studying, although in different PG colleges, but still in NCR. So maybe it was destined to happen. Yeah. And then we just actually started dating only in the final year of our PG college, second year of PG college. But till the time, I mean, since वो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अरेंज मैरिज कर चुके थे। मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ दिस बीइंग टुगेदर, you don't need a moment that you need to go down and these etc. While there is nothing wrong in it. Yes, of course. But for us it was very organic. Very organic. All the Hindi movie Bollywood masala was there. अरे of course. But हमारे देश में वो ना हो तो समझ में नहीं आता. Correct. But we've been married. I actually got married when I was just 24 and a half. Oh wow. Yeah. That's a bold choice from both of your sides. Interesting. Correct. And it's been 15 years. Apart from and independent to the fact that she is also an extremely successful professional. Oh wow. So she has had a career in some amazing companies, and she continues to now do with all fantastic women that do in India, manage the kid, manage work, manage home, manage me. Crazy. Hopefully many more years to come. Yes, of course. Yeah, but yeah, this is just about her. Her name is Kamini. Yes. Yeah. Hi Kamini. And hi Naira also. But ये देखिए, हम लोग रेवेन्यू पे थोड़ा बात करते हैं. We crossed $1 billion of top line, which is not revenue, which is our top line. Yes. In exact 6 months, so 14th February and 14th August. तो ये क्या आपने वो रखा हुआ था क्या कि पता नहीं यहाँ तक पहुँचना है? Maybe the Valentine's Day was lucky for us. The way we wanted to sort of design our reward program was that if not anything, it should always be tangible and it should have real value. Okay. जब ये दोनों वर्ड आए ना, तो फिर मुझे लगा यार चिप्स पोकर में chips have real value, correct? They are actual cash. Yes. And it just sort of naturally elevated or migrated for us to move there. So I've when I was handling credit cards in city, and I've seen multiple products myself, different kind of reward programs. At that point in time, I'd realized that credit cards had become a commodity. Even today, they are a commodity because it's giving you credit access. Yeah. The differentiation happens in the features that you lay on it, which is primarily on the back of reward points. Even in the e-commerce world or in other tech worlds, there were a lot of programs that were getting launched and which had some amazing on the face value of that you get these many reward points, but extremely low explanation as to what to do with these reward points. Yeah. Okay. And when that happens, the biggest indicator is in the financial services world, it is called what is your redemption rate. Okay. Which is basically nothing but कि मैंने लाख चेक चिप्स कमाई तो वो कितनी रिडीम कर पा रहा हूँ मैं. करेक्ट है ना. तो अगर आपका रिडेम्पशन रेट ही बहुत कम है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट आपका प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, कस्टमर का इंटरेस्ट आपसे कम होते जा रहा है. Oh, wow. ऑन द फ्लिप साइड आपको लगता है यार ये मेरे धंधे में तो फायदा है मेरे को कि मेरा खर्चा कम हो रहा है. ओके. एंड दैट इंटरसेक्शन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज टू सॉल्व फॉर. सो ये सेकंड गैप हमको मिल गया. Okay. ये आपको सॉल्व करना है इसके लिए. कि एक तो टैंजिबिलिटी नहीं है. ओके. सेकंड, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है उस प्रोग्राम से क्योंकि उनका रिडेम्पशन रेट भी कम हो जाता है. तो फिर आपके लिए आपको एग्जिट बैरियर आपके रिवॉर्ड प्रोग्राम के कारण नहीं बना पा रहे हो आप. तो हमने जो चेक चिप्स बनाई, जो टू द पॉइंट एज टू व्हाई दिस हैपेंड वाज दैट वी ब्रॉट इन टैंजिबिलिटी इनटू आवर रिवॉर्ड प्रोग्राम. ओके. कि आप दो बहुत सिंपल चीज़ें कर सकते हो. एक तो समझना बड़ा आसान है. आप जितना भी बिल पे कर रहे हो उसका 1% आपको वापस मिल जाता है. तो अगर आपने 1 लाख रुपए का बिल पे करा
जस्ट फॉर आप, हाँ जी। तो आपको 1000 चेक चिप्स मिल जाएंगे। फेयर इनफ, अब जो उसमें एक्चुअल पैसा है। तो उसमें आप 2 चीज़ कर सकते हो। हाँ। उसमें आप काफ़ी ही अच्छी ब्रांड्स के, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट हो गया, डंजो हो गया, सॉरी डोमिनोज हो गया, हाँ। ओला हो गया, उन सब के आप गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। Okay. उनको रिडीम करके उनकी वैल्यू 1 रुपये से लेके 25 पैसे तक के बीच में कुछ भी होती है। ठीक है जी। या फिर आप उनको कैश में कन्वर्ट करके अगला बिल पे कर सकते हो। वाओ। सो आप जैसे तो इसी मुझे 1000 का फायदा हो गया, लाख का 1000 पे 250 रुपये का आपको, तो एक चिप की वैल्यू 25 पैसे की होती है। करेक्ट। तो आपको अब अगला बिल आप पे करो तो आपके लिए वो 250 रुपये कम हो जाएगा। हाँ। तो आपके लिए हमेशा आप ये कंट्रोल में हो कि यार कुछ नहीं तो मुझे इतना तो पता है कि एक चिप की वैल्यू 25 पैसे की है। तो इसको ये हमने डिफाइन करी टैंजिबिलिटी, कि अभी टैंजिबल है, कस्टमर को समझना है। और जैसे ये 3 पॉइंट हमने स्टार्ट हुए, एक सर्टन लेवल ऑफ वायरलिटी आई प्रोडक्ट के अंदर। हम लोग वर्ड ऑफ माउथ आ जाता है ना फिर बहुत ज़्यादा। हमारे पास कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। जब हमने 14 फरवरी को लॉन्च कर रहे थे, सो देयर वाज नो गूगल एड स्पेंड्स, नो फेसबुक स्पेंड्स। द ओनली प्रमोशन दैट देयर वाज 2 थिंग्स। वन, जो हमारा चेक का लिंक्डइन पेज है और ट्विटर पेज है, वहाँ पे बोला कि हम आज लाइव हो गए। और सेकंड मेरा लिंक्डइन पेज है, यहाँ पे मैंने बोला कि हम लोग लाइव हो गए बस। ओके। and we have actively used LinkedIn as a very strong organic LinkedIn traffic as a very strong way of talking to our customers. नहीं भाई, ये शो ऑफ करना जरूरी है कि आपका कैक 25 रुपए है। और हमारे को पहले दिन 20-25 हज़ार डाउनलोड आ गए। वाओ। तो हमको लगा कि ये तो थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा अगर हमको पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। एंड देन इन्वेस्टर्स हैव touchwood have been always on our side. Super. And then it just became just a thing. In the month of March alone, we would have clocked, I think, 1,000 crores of top line or close to 2,000 crores of top line. So it just started becoming an absolutely crazy sort of a journey. In 6 months, as I said, we clocked 8,200 crores, which is $1 billion. Wow. And हाँ, तो मतलब वो ग्रोथ ऑफ एक्वायरिंग मोर देन 6 लाख कस्टमर्स, दैट हैपेंड। हमने आज तक गूगल और फेसबुक में सब कुछ मिला के आई थिंक 18 लाख रुपए खर्च करे बस। हमने आज तक वही करा है। तो आप आरबीआई से डील करते हैं, एक तरफ वो पार्टनरशिप्स हैं और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली पार्टनरशिप्स होंगी। करेक्ट। तो आप you don't have to go and talk to RBI directly. Okay. You work with multiple financial institutions, banks, NBFC, players like NPCI, where you make, which is what is needed to stitch all the platform. But even by stitching, it doesn't mean that they will start promoting you, correct? One of our growth strategy has been ki how can you grow by partnering, where you are able to offer a value proposition to the brand that you work with. तो और कौन है पार्टनर? So I'll give you a very small example. हमने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी थी इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके जी। और हमने बोला कि एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को 1% की जगह 1.5% चेक चिप्स मिलेंगे। सुपर। ओके। बट HDFC वाला करेंगे। बट एक्सिस बैंक ने जब भी अपने कस्टमर्स को बोला कि तुम जाके चेक पे पेमेंट कर सकते हो। अब जब एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स को एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करती है, उस नए प्लेटफॉर्म को एक्सिस बैंक का ट्रस्ट रब ऑफ करता है। यस, ऑफ कोर्स। देखिए, अगर आप चेक के बारे में नहीं जानते तो आप कितना ही ट्रस्ट कर लेंगे, बट अगर आपको HDFC आपके एग्जांपल में अगर बोलता है कि जाकर कर सकते हो तो आपको एक ट्रस्ट मिलता है। करेक्ट। तो उसके कारण हमने काफ़ी नए कस्टमर्स के लोगों को उनको हमारे बारे में पता चला। और जब उनको पता चला, जब उन्होंने ट्राई करा तो फिर वो लोग हमारे पास आ गए क्योंकि प्रोडक्ट उनको बड़ा आसान लगा। मस्त है भाई। सो एक ये सेकंड स्ट्रैटेजी रही है। तो हाँ, तो ये जो ग्रोथ की जर्नी रही है, ये बड़ी ही फ्रेंजी वाली रही है। ऐसा पागलपन नहीं हुआ भाई, सैलाब आया इतना। वो शुरू के 25-30 दिन तो बहुत ज्यादा था। फिर हमको लगा कि चलो अब यही लाइफ है, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। बट क्योंकि वो फिर बेसलाइन में था ना, हर एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी एक
फर्स्ट माइलस्टोन होता है, वो एक बेंचमार्क बन जाता है, फिर आपको उससे बेहतर ही करना होता है। आपकी मतलब वो हो गई ना, प्रॉब्लम हो गई है तो। It's a good problem to It's a have. good problem. It's a good problem. I would rather be having a problem here rather than be running a company where we're not able to attract customers. Yeah, of course. फी लॉन्च होनी है ये तो हमें पता था, पर हमें कितनी लॉन्च करनी है उसके ऊपर भी बड़े डिस्कशन हुए। I'm sure ये मल्टीपल फायरसाइड चैट्स वाली जो मीटिंग्स होती हैं कि भाई सब चिल्लम पुकारी चालू, एंड वहाँ पे मतलब आपको मतलब sometimes I hope कि वहाँ पे कहीं कैमरा होता and we can all relook on those discussions that we took on the discussion that we had. But we modeled it. I think as Mr. Murthy says, in God we trust, for everything else please bring data. Yes. So we modeled it as much as we could. The biggest challenge for us was that we did not have an industry benchmark to look at. Like that's किसी और ने किया तो कैसा रहा? Exactly, correct. क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, तो हमारे लिए कोई बेंचमार्किंग थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो एक देयर वाज अ सडन लीप ऑफ फेथ, ओके, एंड देन द सेकंड प्रिंसिपल दैट वी, or maybe the first principle that we applied, that from a consumer perspective, the consumer should always get more than what he or she gives. Yeah. Like that first principle was always there. So from a pricing strategy, हमने करा, I remember I'd gone back home on 24th night, and इंदौर गए थे आप? No, back home, in Bangalore. From office I was home, and then on 25th, like just from when we cut over from 11:15 into 12, for 15 minutes I did not have the energy to go on Twitter. Okay, that I did not have the capacity, and then I called Nitish and I just asked him, I said, how bad? He said, welcome to proper trolling world. Yes, of course. And the next 5 days were absolutely crazy. So you were memes. Oh, we were the meme. We were the meme. So ouch, that hurts. Yeah, but कितना लूज किए थे आप, मतलब? So I think so broadly 3 चीजें बता सकता हूँ मैं. हाँ प्लीज. I think now it's been 3 months, 2.5 months. June, July, August, 3 months now. 25th हो गया. We've been able to retain, the way I look at it, we've been able to retain 77% of customers. Kudos, boss. Which were there when we were a free platform, and that is great. Yeah. We're really proud of it. We love the 23% who are not with us right now, and we're trying to do every possible thing to bring them back. Okay. But yeah, that's one data point. Second, of course, what happens is that your audience is now a bit different. It's not everyone out there. There are now that a smaller set of consumers who would be okay with it. But as an entrepreneur, you take that decision. Fair enough. That this is what we are building for. बर्न मॉडल्स को बहुत ज्यादा गाली मिलती है भाई मार्केट में, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. या मुझे सेट आई थिंक गाली तो मुझे लगता है सभी चीजों को मिलती है. कैसे भी मिलती है. आई एम आफ्टर पॉइंट इन टाइम, आई एम श्योर यू हैव आल्सो डेवलप्ड अ थिक स्किन, करेक्ट? 100%. मतलब अब हो चुका है, आप कुछ भी कर लो. जी ठीक है, लाइक आप मैनेजमेंट है आप. तो आई थिंक सेकंड इज दैट. Yes, but third, I think we have seen out of the 77% customers, 20% of customers actually took a break for a month and then came back. Oh really? Yes, and it's a very interesting data set. So customers, I've talked to whatever, maybe 200 customers. आप directly बात कियो? Yeah. So I do. My team does even more. So CRM करते हैं आप लोग? तो ये CRM बोलो जो भी बोलो, बेसिकली I want to just know 2-3 things. One, why do you use our app? Okay. What do you like? Okay. If you have left our app, what did you hate in our app? You know what? And third, what do you want more from our app?
ओके और पुख्ता जवाब मिलते हैं आपको इसके? अरे एकदम खुले, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक मिलता है. एंड like it's very, I mean, I think it's the best time that we have in our office when anyone just goes and talks to customers. So हाँ 20% लोग ओवर द कोर्स की गए और फिर धीरे धीरे वापस आए, बिकॉज लाइक फर्स्ट इट्स अ बिट ऑफ अ, again, this is my understanding and part of what customers told us, but also a flavor of what I believe happened. There were a lot of customers who believed, how can you, जो चीज़ जब फ्री ही है तो तुम कैसे ही पैसे चार्ज कर सकते हो, वाला एक एंग्स्ट था. ओके, so then they go to some other platforms or go to the fat platforms they were back previously using. And then hypothetically, if they're using, then they realize, oh, while I have left CheQ, what have I gained coming here? From a proposition perspective is where when the anger is a bit lesser, then maybe mathematics comes in, and then they realize that still the value proposition on CheQ is stronger in most cases, and then they come back, and we are always, not, for lack of better word, not much stuck to them. We don't take it for granted. We try really hard. This is not a fancy story. There are days when it's a massive struggle. We feel grunted about many things. That 0.04% customers who we failed as a company to help them deliver the bill, and their money was just stuck in oblivion, or a customer who has done 25 transactions in just 3-4 months on a platform, and he feels, oh, I have to leave you now. Correct? You hate that idea, correct? So we yearn for them. 100%. But I think they also understand that we have to build a business which is sustainable. आप लोग में से जो CheQ यूजर्स हैं जो छोड़ के गए थे और वापस नहीं आए, वो लोग मुझे कमेंट्स में बताना क्यों नहीं ऐसा है. जो लोग वापस आए वो भी बताइएगा. बट आप लोग CheQ चिप्स कहाँ यूज कर रहे हो, मेरे को बताना टिप्स. But it's been, as I said, 2.5-3 months. We've crossed $500,000 of revenue. तो ये लोग तो पूछेंगे ही. देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप पैसा कैसे कमाते हैं? How does CheQ make money? So अभी हम लोग पैसा हमारे कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं जी. तो एक तो फीस हो गई आपकी. हाँ, तो एक हमारी फीस हुई जो कि हमारी लार्ज पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन है. सेकेंड, और कितनी फीस लगती है भाई? सॉरी टू इंटरप्ट. No, it's a very small fees. It is of whatever money or whatever is your bill or that you are paying on us, we charge 0.2%. Oh, but we cap, and we also cap it to $99. That's it? Yes, but sometimes it hopefully like we have more customers who tell okay, that's it. And there are many. आपको नेट देखना है ना, साल के एंड में अगर आप अपनी बैलेंस शीट करेंगे तो आपको नेट फायदा हो रहा है ये देखना है ना, मेरे ख्याल से. दैट्स हाउ आई थिंक. हाँ, तो मतलब लाइक वी हैव दिस कैलकुलेटर, करेक्ट? जैसे आपको हमने वही वाला एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए के बिल के ऊपर आपके 99 रुपीज़ की फीस लगेगी. आपको 1 लाख पे 1000 चिप्स मिलेंगे. अगर आप उसको अगले बिल के लिए भी पे करें तो आपको 250 रुपए का तो वैल्यू है. yes. तो आप उसी बिल में आप 150 रुपए तो आप नेट पॉजिटिव है. yes. which is the point that I said, that those 20% customers hopefully felt that CheQ was still the most valuable platform which was out there. गणित करते हैं और आ जाते हैं. हिंदुस्तानियों के हमारे ये फायदा है, गणित पे विश्वास है. देखिए कायम. और हम लोग हर तरीके से उनको बुलाने की कोशिश भी करते हैं. सवाल तो आप बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द फीस कोई कम और दूसरा साधन? So second, because we help institutes collect money, there is a very, 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 very small fee that we are able to charge to them. All right. So that is second. And now we are bringing more products जिसमें कि हम थोड़ा और रेवेन्यू बना पाएंगे. Nice plug. Future of CheQ. It's going to happen in the next 60 to 90 days. क्या कर रहे हैं आप लोग? We should just wait for it. अच्छा ये बात नहीं बता पाएंगे आप. Fair enough. Correct.
But like the whole thought process is around why should credit cards have all the fun? Yeah, fair enough. So we're trying to create something really interesting about a product which has been fundamentally become very boring. And that's मतलब सिर्फ लाउंज में यूज होने के लायक नहीं होना चाहिए ना आपका क्रेडिट कार्ड. That shouldn't be the only selling proposition, right? Correct. In fact, selling proposition सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे ही क्यों होनी चाहिए, हम तो वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं. So you will see it very soon. Hopefully, we're able to build a new product in the way that customers will absolutely love. Interesting way. So yeah, so this has just been our journey. Crazy. So I've asked this to a lot of founders that I meet, business leaders also. Is it lonely at the top? If you want me to be brutally honest, I think I have never felt even for one day. Okay. The idea of being on top is not a very active thought. Second, the 5 people that we are, between me and the 4 core members, I think it's an accepted understanding that 5 of us run the company. Okay. And तो फ्लैट स्ट्रक्चर जैसा रखा है आपने. And because we also want speed, only in times of where we are not able to take a decision, when there is this more than significant conflict, we use me as the way to sort of veto and move forward. But I think so from that point, I've never felt that, in my struggle, in my days of struggle, I can't go and talk to anyone. Yeah. Like that just never happened. In my office, if it's been a really bad meeting that I've had with an investor, or if something was that close from a partnership perspective and that fell flat, I've never shied away talking to my people. Oh, very cool. So one, that helps. So taking the bull by the horn types. Taking anything by the horn. पता नहीं, Sid, इतना Black and white melodramatic है ही नहीं मेरे लिए ये. I don't know, like some people talk about कि startup में जो startup करता है founder, उसकी life भसम हो जाती है, personal life. हाँ. Dude, like ऐसा मेरे से तो कुछ नहीं हुआ है. Fair enough. सही है. तो and I'm happy about it. I'm not missing something in life. Oh dude, why am I not feeling those crazy emotions? नहीं हो रहा. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. I love audacity. हाँ जी. I love speed. Yeah. To me, hustle is extremely overrated. हाँ. I am not the guy for hustle. And we're not trying to build a company which is just hustling, because if you're just hustling, or what, I hope that's a word. Yeah. If you're just in hustle mode, then you are just not planned. Yeah. And तो chaos है बस खाली. And we would want to bring structure into chaos. Fair. And that is how we have built it. So yes, I have no such crazy stories कि हमने एक गैराज में काम कर रहा था, हमने पहले ही दिन WeWork में काम करा था. हम फिर 3 महीने बाद हम लोग हमारे Beehive ऑफिस आ गए जी. We were lucky, extremely lucky to find very very good people very early. Yeah. And we had a good core team of 30 people in 6 months. Super. And this is during the time जहाँ पर recession की खबर बढ़ रही थी और लोग कोई भी स्टार्टअप ज्वाइन करने से हिचकिचा रहे थे बैंगलोर में, राइट? वो था. वो एज अ फाउंडर or as any other leader in the company, it is a part of a job that you need to be able to convince, sell your idea, and make them part of the dream that you're looking at. So consistently आप इंटरव्यू आप दे रहे हो लेते साथ. Maximum time. मतलब at least I remember in the first 6 to 7 months, in an interview, in a 60-minute interview, I am speaking for 35-40 minutes. and there is no shame in this, correct? And you do it every day, and you do it without fail. And out of 6, 7, 8,
maybe one will join. In our office, I think we've developed a lot of good friendships. Sundar. So sometimes we go a lot. Of course. So these are nice office parties. Yeah, we have very nice office parties. I would really want to believe that. Let's hope the folks watching this from CheQ will let us know in the comments about the real truth. Correct. And you can add some photos to make it even more real. But second, I think spending real good quality time, weekend time with family, chilling out. We have this bunch of 4-5 families within the society who are very close. So we just like at least 1-2 weekend we are always out of the city. और ये fintech वाली public नहीं है? नहीं, ये बस मतलब बस extended family है हमारी, जो साथ में रहते हैं हम लोग. और तीसरा, मैं जब भी मुझे टेंशन होता है या जब भी फ्री टाइम होता है, आई एम ऑलवेज लॉक्ड ऑन टू माय चेस ऐप. ओके. अच्छा, आप चेस फैनेटिक हैं? मैं चेस फैनेटिक हूँ, हाँ, एब्सोल्युटली. और ये मेरा क्रेज पिछले 3 साल का नहीं है. हाई समय. I was an average good player. I don't know how to put it. I'm an international rated chess player. Oh, super. So I have an LO rating. I have an LO rating of 2100. ये तो flex है फिर. I was a 3-time MP state junior chess champion. Oh, crazy. And that changes your critical thinking and your like patience levels, no? Chess. I think critical thinking definitely. Yeah. And your ability to visualize things much deeply, much advanced. I think those are two things. I think that just happens a lot. So yeah, I was there. I played professionally from 89-90 till 2002. But every day I'm able to find at least 90 minutes to play chess. Every day I played 90 minutes of chess. Wow, that's and cool. It can be at any hours of the day. But 90 minutes of chess. Super cool, man. Happens. So that's just the best getaway for me. It's something that I love. It's something it's very easily accessible. So I don't have to go anywhere. And it continues to be a mind stimulator. Credit card payment histories या data से आपको spending patterns का समझ आता है कि इंडिया का कि हम कहाँ spend करते हैं as a nation? So today we don't do that. Sid. While as a platform. You can. Yeah. 40 million people have credit cards. Yeah. That is a problem. Correct. And so there is a clear 10x opportunity out there for us to increase. My independent interpretation on this is that credit cards might not be the instrument which will fill the void. Okay. Because the plastic is increasingly losing its relevance. ठीक है. With UPI on credit card coming, which is today only allowed on RuPay credit cards. Yeah. So for example, with your RuPay credit card, you don't need the physical plastic at all. Correct. Right? You can just scan and pay. Yeah. And whenever the government allows it for Visa and Master and other networks, you will not need fundamentally plastic. So that's the stage 1 evolution. The stage 2 evolution, if there is no plastic, so then what is a card? A card is nothing but just a line. Yeah. Right? Fundamentally, it is a line that you have, a credit line that you have. Correct. And so online chala lo. So then the next evolution to me will be, today you have credit card on UPI, tomorrow you will have a credit line on UPI. Okay. Where you can just dip in and get a credit line which within you can seconds types. Yes, and whatever you dip in is the only amount of credit that you will be charged interest on. And that will be that. आप बाहर गांव जाइए, अमेरिका जाइए, आपको लगेगा क्या हो गया, हमारा देश इतना किकैस कैसे है, फट करके पेमेंट होता है बॉस, बिना कैश के आप घूम सकते हो. उधर खाली एक वेनमो शेनमो है बस, उसका वो लोग फ्लेक्स मार रहे होते, इधर आओ भाई जरा 5 ऐप रखे अपन. इंटरनेशनल एक्सपेंशन का नहीं सोचा आप लोग ने? To me, the India problem is large enough, Sid, that I think for the next 5-7 years we're just very, very focused in India. Okay. We will take it from there. Does this problem statement exist in countries beyond India? The answer is a definitive yes. Yeah. But we believe that the Indian opportunity is just very, very big, and we need to be very focused.
and that's what we're going to be for the next 5 years, and then time shall tell. भाई ये चलती में एक मैं अपना थोड़ा सा हाथ गीला कर रहा हूँ, बट फॉर द फोक्स वाचिंग दिस मैशेबल मॉर्निंग्स एपिसोड, क्या हम डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्काउंट या कुछ एक ज्वाइनिंग बोनस कुछ डाल सकते हैं क्या? हाँ, तो आप आपके लिए ही स्पेशली आप लिंक शेयर कर दीजिए, उस लिंक तो एक लिंक होगा फोक्स जिसमें मिलेगा, आप पुलिस डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें प्रोसेसिंग फी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ रहेगी। डन, डाउनलोड करो पब्लिक, ये लिंक है देखो, ये लिंक है इधर नीचे। और कमेंट में हमको ये जरूर बताना कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला, क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मालूम था यार कि क्रेडिट हेल्थ इतना ज़्यादा पूरे देश की जीडीपी तक को कंट्रीब्यूट करती है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मैशेबल मॉर्निंग्स। देखिए आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और क्या फर्स्ट ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फी माफ। यस, तालियां तालियां। देखिए मैशेबल इंडिया को सब्सक्राइब करने के कुछ फायदे तो हों, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल हियर। अगर आप लोग ने देखा है पूरा, आपको हमें कमेंट्स में जो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो बता दीजिएगा। बाकी इनके इंस्टाग्राम अगर लिंक्डइन पे फॉलो करना है तो ये लिंक्डइन पे डालते रहते हैं काफ़ी अपडेट्स, वो पढ़ लीजिएगा जाके। दिस इज मी सिद्धार्थ आलमबैन साइनिंग ऑफ। बाय गाइस।